Good afternoon, children. Today, in EVS Part 1, lesson number 6, that is variety in food, we are going to learn about the food that we eat daily and from which region it comes, in which season we can grow that food, and which ingredients do we use to make the different kinds of food items. Okay, so let's go through this. Here I have made a chart, grain or vegetables, then the dishes made from it and the total numbers of it. See, rice. Rice is the grain. So we used to make bhakri, idli, steam rice, modak and dosa, then kheer from the rice. So I have got total 6 numbers of the items that we can make from the rice. यानी 6 items हम लोग rice से बना सकते हैं. Next is the wheat. So you are going to tell me in the online session that which items do we make from the wheat. Then moong dal, we make dosa, then moong dal khichdi, and too many things are there. So you are going to talk about this in the online session. Okay, now let's see the map. It's a map of India. It's our coastal region. This is the coastal region. It is the central part, this is the north part, and this is the south part. Okay, this is the south part, it's a central part, this is the north part. Okay, and this is our coastal region. Coastal region यानी जहाँ पे समुंदर किनारा है वो. Now if you see, this is the symbol of rice, this is the symbol of wheat, and this is the symbol of jowar. Now we are going to find out which food crop is grown on the large scale in the coastal region. So in the coastal region, what you can see, yes, rice. Which food crops are grown in the North India? So this is the North India. So which is the main food of the North India? So main food that grows in the North India, that is a wheat and a rice. Then which is the major food crop in the central region? So in the central region, there is the major food crop is a wheat and a jowar. Rice is grown on a large scale in the southern part of India. So what is the reason for that? Because the availability of water and the appropriate rainfall. As we know, agriculture is the main occupation of our India. It's mainly depend on the rainfall. यानी बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है. The rainfall received in all regions is not the same. Somewhere it's a high rainfall. So the crops like rice, coconut, ragi and varai are grown well in that area. But wheat, tur and soyabean are grown in the region of moderate rainfall. यानी जहाँ पे कम बारिश होता है, ऐसे इसमें wheat होता है, tur होता है, सोयाबीन होता है. Then ज्वार, बाजरा and mud. These beans are grown in the low rainfall area. यानी बहुत कम बारिश जहाँ पे होता है उस एरिया में ज्वार, बाजरा और मट ग्रो होता है. So to help crops to grow well, good seeds, fertile soil, sufficient sunlight and water are needed. So what are needed? Good seeds, अच्छे बीज, fertile soil यानी सुपीक जमीन, sufficient sunlight, जितनी चाहिए उतनी sunlight and the water. These are needed. So according to the seasons, a variety of grains and the fruits and the vegetables are grown in our country. So जैसे सीजन होता है वैसी सारी चीज़ें हम लोगों को फूड ग्रेन्स यानी धान्य, fruits and vegetables मिलते हैं. Okay, now here the picture of the fruits. You are going to divide this into the fruits that comes in the summer season, the fruits that comes in the rainy season, and the fruits that comes in the winter season. This we will do in the online session. So here you can see jackfruit, mango, apple, jambul, grapes, banana, strawberries, watermelon, oranges, this extra grows in the summer season, and in the rainy season apple, grapes, banana and oranges. Then fruits in the winter, guava, apple, grapes, bananas and oranges. But nowadays in all the season we get all the fruits. Do you know what's the reason? Because the things that are required for this are available easily थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में. इसकी वजह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल होती है ऑल अराउंड द ईयर. If you say it's a map of Maharashtra, here you can see the food items: rice bhakri, nachni bhakri, modak, fish rice, red white mutton gravy, appe,
prawn curry, idli, dosa. So these are the food items that we prepare, that are the famous and mostly eat at these places. यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस है और मोस्टली खाई जाती है महाराष्ट्र और नेबरिंग स्टेट्स में. ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू मेक द चार्ट कि विच स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, नेम लिखना है, कौन सा फूड आइटम बनाया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है. जैसे फिश एंड राइस है तो मेन इंग्रेडिएंट फिश एंड राइस हो गया. मोदक है तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, राइस एंड अ कोकोनट. ओके, सो सच ए वे यू आर गोइंग टू राइट द मेन इंग्रेडिएंट्स कि कौन सी चीज़ों से वो बनाया जाता है. द मेन क्रॉप ग्रोन इन एनी रीजन इज यूज टू मेक वेरियस आइटम्स. यानी जो मेन क्रॉप वहाँ पे आता है उससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल ज्वार इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्लेटू रीजन ऑफ महाराष्ट्र. ओके, जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्लेटू रीजन देखा. प्लेटू यानी पठार जो रहता है ना, पहाड़ों वाला थोड़ा सा एरिया. सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ ऑल ज्वारी है, राइट. सो फ्रॉम द ज्वार हुरदा, लाह्या, भाकरी, घुगऱ्या, पापड़, सांडगे, आंबील, धपाटे, धिरडे, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती है. ओके, एंड इन द कोकन एंड कोस्टल रीजन राइस, कोकोनट एंड अ कोकोनट ऑयल आर द मेनली यूज्ड बिकॉज दैट ग्रो मेनली इन दैट एरियाज. So in central Maharashtra, jowar, bajra, groundnut, soybean, sesame and mustards are mostly commonly used. ओके, सोयाबीन है, फिर सोयाबीन का भी ऑयल निकलता है. सीसम यानी तिल है, उसका ऑयल निकलता है. मस्टर्ड यानी राई, तो उसका भी ऑयल निकालते हैं. ओके, सो द वैरायटी इन द क्रॉप्स इज डिपेंड ऑन द चेंज इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल. द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ दैट पीपल. जो क्रॉप वहाँ पे होता है वो लोगों के डाइट का पार्ट होता है, यानी लोग वो खाते हैं. सो वाई ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल फॉर अस नाउ अ डेज, इवन द सीजन इज़ नॉट देयर. ये सीजन नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों को कई सारी चीज़ें मिलती हैं. सो वॉज द रीज़न, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड्स, इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. सो all the things are included in this lesson. So today we learn about all these things.